The next topic is complement system. Okay. The literal meaning of the word complement means to help. The complement system in our body will help in the acquired immunity, and it also plays a role in inflammation. So what are these complement? These are group of proteins which is present in the serum. So complement is 5% of the serum globulin. Okay. These are basically a group of proteins which is present in the serum, and it is an inactivated form. For its activation, there are three pathways, and the three pathways will have different types of trigger. So it is activated by three types, and each will have a different trigger. Once they are activated, they will augment the immune response. The immune response will be started, and it is a part of both innate and acquired immune response. Okay. So innate and acquired immune response, they are linked to each other, and complement pathway is the best example that links both of them. These are heat labile proteins. Okay, heat labile means at high temperature they will get denatured. At high temperature, when they get denatured, they will be converted in inactivated form. So generally these complement proteins are in inactivated state in the serum. They are activated by three pathways. The mnemonic is CAL. C stands for classical, A for alternative, and L for lectin. These three pathway has different trigger. The classical pathway is triggered by antigen antibody complex. So for classical pathway we need complex, immune complex. Antibody has to be there, and this antibody should be bind to the antigen. So for this complex is needed. Alternative pathway is triggered directly by the antigen. For this complex is not needed. ठीक है, classical pathway के लिए immune complex ज़रूरी है. ठीक है, antigen और antibody should bind to each other. Alternative pathway directly वो antigen से interaction के कारण triggered हो जाता है. Lectin pathway के लिए we need mannose binding lectin. ठीक है, तो ये mannose binding lectin क्या करते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनके सरफेस पे शुगर्स प्रेजेंट होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि मैनोज. तो दीज मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन विल बाइंड टू इट, एंड देन द pathway will be activated. So three pathways: classical is triggered by the complex, alternative directly by the antigen, and lectin we have special molecules like lectin binding for lectin we have proteins like mannose binding lectin. Classical pathway relies on antibodies binding to the antigen. Okay. When these antigens will bind to the antibody, then the pathway will be initiated and MAC will be formed. So MAC stands for membrane attack complex. These membrane attack complex will be deposited on the membrane of the microbes and thus destroy them. Alternative pathway is antibody independent. It only requires the antigens. It is triggered by the pathogen surface like lipopolysaccharides. Lipopolysaccharides is present in the gram-negative bacteria, and it begins with the spontaneous C3 hydrolysis. So C3 is very unstable because it has thioester bond. So it undergoes spontaneous hydrolysis, starting the alternative pathway. In case of gram-negative bacteria, the trigger for alternative pathway is lipopolysaccharides. If it's a gram-positive bacteria, it can be triggered by teichoic acid. In case of fungal infection, chitin can be the triggering agent. Other triggers for alternative pathway are IgA, IgG4, IgD, CRP, that is C reactive protein, and snake venom. The last pathway, that is lectin. It is triggered by mannose binding lectin. It is
triggered by lectins recognizing sugar molecules on the pathways, on the pathogens. Let's see the steps of complement activation. So these steps will be common in all three pathways. First, because of the trigger, the pathway will be initiated. First, C3 convertase is formed, then C5 convertase is formed, and finally, membrane attack complex, that is MAC, is formed. Okay, so this happens on all three pathways. First, they will be initiated by the trigger, then C3 convertase is formed, then C5 convertase, and finally the membrane attack complex. Let's see in detail about these pathways. First is classical pathway. So classical pathway, the trigger is antigen antibody complex. So this is the antibody and it will bind to a antigen, and then this pathway will be initiated. The first complement to bind to this antibody, okay, this region of the antibody, CH2 region of the antibody, will be C1 protein. Okay, so C1 has three parts: C1q, R and S. So they will join in this manner only. Pehle C1q will join, then C1R, and finally C1S will join. Then C4 will come. It will split into C4A and C4B. C4A will move away and C4B will bind to this part. Okay, C4B will bind and C4A will move away. Okay, C4B, this part is heavy part, and so it binds and C4A is moved away. Then C2 comes. C2 will also split in C2A and C2B. In this case, C2B will move away and C2A will bind to the complex. So first there is antigen antibody complex. First C1 comes, then C4 comes, in which C4B binds, then C2 comes, in which C2A binds. So this is known as C3 convertase. Okay. Yeah. This is known as C3 convertase, C14B2A. Then now it will convert the C3 will come, C3B will move away, C3A will move away, and C3B will bind. Then this part will be known as, if C3B binds, this is known as C5 convertase. Then C5 comes, C5A is also moved away. C5B part will not bind, it will invite other complement proteins like C6, 7, 8, 9, and then membrane attack complex will be formed. Okay, C5, 6, 7, 8, 9. C5 will not bind, it will call the other complement, and then the membrane attack complex will be formed. It will be deposited in the membrane of the microbe. The membrane will be destroyed and ultimately the bacterial cell will die. So this was about the classical pathway. Classical pathway is triggered by antigen antibody complex. First C1 complement comes and binds. C1 has three parts, Q, R, S. Then C1 के बाद 4 will come. 4 का कौन सा पार्ट बाइंड करेगा? C4B will bind, C4A will move away. Then 2 will come, 2B will move away, and 2A will bind. Okay, now this complex is known as C3 convertase. Now C3 comes, C3A will move away, C3B will join them. Okay, C3B will join them. Now this is known as C5 convertase. Then C5 comes, C5A is move away, C5B, it will not bind to them, it will form MAC, that is membrane attacking complex, by inviting C6, C7, C8, C9, and then this membrane attack complex will be deposited in the bacterial cell and lead to the lysis. Okay. So this is known as
C3 convertase, and when this comes and join, it is C5 convertase. The second pathway, that is alternative pathway. Alternative pathway is started by the spontaneous hydrolysis of C3. Okay, so C3 is highly unstable because it has thioester bond. So because when it will be triggered, it will undergo spontaneous hydrolysis. It will be broken into C3A and C3B. C3A will move away. This C3B will be there. So suppose the trigger is lipopolysaccharide. C3B binds to it. Okay, there is a factor D and there's a factor B. In presence of factor D, factor B will change to BA and BB. Okay, this is happening in presence of factor D. तो alternative pathway के लिए factor D और factor B required है. factor D के presence में ये जो factor B है ये BA और BB में change होगा. Now BB will bind to it. ठीक है, BA will move away and BB will bind to the. Okay, so now it's C3B along with BB, and this is highly unstable. तो इसको स्टेबल करने के लिए we have a protein known as properdin. Properdin will stabilize this complex. ठीक है, properdin के absence में इस complex का जो half life है वो 5 minutes होता है, but because of properdin the half life will change to 30 minutes. ठीक है, तो alternative pathway में क्या होता है, C3 के spontaneous hydrolysis से ये pathway start होता है. ठीक है, C3 will be broken into C3A and C3B. C3B will bind to the antigen, and in presence of factor D, factor B will split into BA and BB. BB will join to the complex. The complex is stabilized by properdin. So this complex is known as C3 convertase. This complex of C3B and BB is known as C3 convertase, and it will cleave more C3 into C3A and C3B. Now this C3B will bind to this complex to form C5 convertase. Okay, where C5 convertase will be formed, C5 will come broken into C5A, C5B. C5A will move away, C5B will invite the other members, that is C6, 7, 8, 9, and then membrane attack complex will be formed, and then finally there will be lysis of bacterial cell. So alternative pathway is started by the spontaneous hydrolysis of C3. So the third pathway, that is lectin pathway. The lectin pathway is initiated when the mannose binding lectin binds to the mannose on the bacteria. So on the microbes, mannose will be present. These are the mannose present on the bacteria, and the membrane binding lectin, okay, it will bind to these bacteria. So MASP, that is MBL associated serine proteases. These are associated with the mannose binding lectin. These are again of two types, MASP1 and MASP2. So after mannose binding lectin, MASP1 and MASP2 will bind to it. Okay, this is known as the MBL complex. Okay, first mannose binding lectin, then these two proteins, that is MBL associated serine proteases 1 and 2 will bind to it and form the MBL complex. ये MASP2 क्या करेगा, this will cleave the C4 into C4B and C4A. This C4A will go away, it will act as a anaphylactoxin, and C4 will bind to it, then C4B binds to it. This is known as the C3 convertase. Yeah.
C4b will bind to it, then the C3 convertase will be formed. C3 convertase is formed, then C3 will be cleaved into C3a and C3b. Then this C3b will bind to it and form the C5 convertase. Then C5a and C5b will be formed. C5a will go away, it will also act as a anaphylatoxin, and C5 will initiate the formation of membrane attack complex by inviting C6 to C9 proteins, and then finally bacterial cell lysis will be there. So these are the three pathways: classical pathway, lectin pathway, and the alternative pathway. Let's see the functions of these complement system. First is complement mediated cytolysis. How is this cytolysis done? By the formation of MAC, that is membrane attack complex. membrane attack complex के formation के कारण complement mediated cytolysis होता है. The membrane attack complex will create pores or channels in the target cell membrane. जो भी माइक्रोब का सेल मेम्ब्रेन होगा उसमें ये डिपोजिट होके पोर्स या चैनल्स क्रिएट करेंगे. इन पोर्स से आयंस और वाटर्स उस माइक्रोब में जाएंगे, जिससे स्वेलिंग या लाइसिस होगा एंड अल्टीमेटली सेल डेथ होगा. ठीक है. दिस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म पोर्स और चैनल्स इन द टारगेट सेल मेम्ब्रेन, जिससे आयंस और वाटर जाएंगे सेल में, सेल का स्वेलिंग या लाइसिस होगा एंड अल्टीमेटली सेल डेथ होगा. This mechanism is effective against bacteria, enveloped virus, damaged cells, tumor cells and other foreign या abnormal cells. So काफ़ी wide range के against ये effective होता है. Bacterias, enveloped viruses, damaged cells, tumor cells या कोई भी foreign या abnormal cells. Then second function is inflammatory response. Complement components like the C3a, C4a and C5a are known as anaphylatoxins. ये जो C3a, C4a, C5a है जो कि कॉम्प्लेक्स से बाइंड नहीं करते थे and they moved away, they are known as anaphylatoxins. ये सब मास्ट सेल रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे, उनका डीग्रैन्युलेशन करवाएंगे. तो मास्ट सेल्स में जो है वो ग्रैन्यूल्स होते हैं. ठीक है. इन ग्रैन्यूल्स में क्या होगा? हिस्टामिन प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो जो हिस्टामिन प्रेजेंट होगा ग्रैन्यूल्स में, अगर ये ग्रैन्यूल्स का डीग्रैन्युलेशन हो जाएगा तो फिर हिस्टामिन्स विल रिलीज. ठीक है. हिस्टामिन रिलीज के कारण वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और जो वैस्कुलर परमिएबिलिटी है इट विल इंक्रीज, allowing the immune cells to assess infection sites. Okay, so C3a, C4a, C5a, these are anaphylatoxins. ये मास्ट सेल का डीग्रैन्युलेशन करवाते हैं, जिससे जो हिस्टामिन है वो रिलीज हो जाएगा. हिस्टामिन के कारण वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है. थर्ड फंक्शन इज ऑप्सोनाइजेशन. जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है C3b और C4b, these acts as opsonins. Opsonins क्या करते हैं? They enhance phagocytosis. Opsonins के कारण phagocytosis increase हो जाता है. ये इम्यून कॉम्प्लेक्स के अराउंड जाके कोटिंग बनाएंगे. ठीक है. या एंटीजेंस के अराउंड जाके कोटिंग बनाएंगे, जिसके कारण फैगोसाइटिक सेल्स उन्हें और ईजिली रिकग्नाइज कर सके. ठीक है. तो C3b और C4b ऑप्सोनिन जैसा एक्ट करते हैं. ये एंटीजन या इम्यून कॉम्प्लेक्स के अराउंड जाके कोटिंग करते हैं, जिससे वो और ईजिली रिकग्नाइजेबल हो जाए बाय द फैगोसाइटिक सेल्स. C5a it further boosts phagocytosis by increasing the expression of CR1, that is complement receptor 1 on phagocytes, improving their ability to engulf pathogens. C5a क्या करता है? जो फैगोसाइट्स है उनमें कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 का एक्सप्रेशन इंक्रीज कर देता है. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 का फैगोसाइट्स पे एक्सप्रेशन इंक्रीज करने के कारण उन फैगोसाइटोसिस का ईजिली फैगोसाइटोसिस हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 का एक्सप्रेशन अगर फैगोसाइट्स पे इंक्रीज होगा
तो ये जो फैगोसाइट्स है ये पैथोजेंस को ईजिली इनगल्फ कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर का एक्सप्रेशन के कारण जो फैगोसाइट्स हैं उनका एबिलिटी टू इनगल्फ द पैथोजन विल इंक्रीज। Then the next function is clearance of immune complexes. C3b plays a crucial role in clearing immune complexes from the bloodstream. Red blood cells पे जो C3b present होता है उनसे immune complexes bind करते हैं and these red blood cells will be transported to the liver and spleen. ठीक है, RBCs पे C3b होते हैं, उनसे इम्यून कॉम्प्लेक्स बाइंड हो जाते हैं एंड दिस थिंग इज ट्रांसपोर्टेड इन द लिवर एंड स्प्लीन। लिवर एंड स्प्लीन में दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स एंड फैगोसाइटोज्ड बाय द इम्यून सेल्स। ठीक है, RBC पे C3b और C3b किससे बाउंडेड है? इम्यून कॉम्प्लेक्स से बाउंडेड है। ये सारा चीज़ लिवर और स्प्लीन में ट्रांसपोर्ट होगा। लिवर और स्प्लीन में C3b और जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो सेपरेट हो जाएंगे RBC से और फिर उसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। द लास्ट फंक्शन इज वायरल न्यूट्रलाइजेशन। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रलाइजिंग वायरस। वायरस के सरफेस पे कॉम्प्लीमेंट का कोटिंग होगा तो उससे बाइंडिंग साइट्स जो है उनका वो ब्लॉक हो जाएगा। वायरस के सरफेस पे कॉम्प्लीमेंट का कोटिंग होगा जिससे उनका बाइंडिंग साइट्स ब्लॉक हो जाएगा एंड इन्फेक्टिविटी विल बी रेड्यूस्ड। ठीक है, C3 ये मीडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन ऑफ वायरस पार्टिकल्स कैन मार्क देम फॉर फैगोसाइटोसिस। कोई वायरस है, उसका ऑप्सोनाइजेशन C3b कर लिया है, अब ये ईजिली फैगोसाइटोसिस हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का। एक्टिवेशन ऑफ द क्लासिकल पाथवे कैन लीड टू द लाइसिस ऑफ एनवेलप्ड वायरस। क्लासिकल पाथवे के कारण एनवेलप्ड वायरस का लाइसिस हो जाएगा। These functions of the complement system are critical for body's defense against infection, tissue damage, and maintenance of the overall immune homeostasis. Okay. Let's see the clinical importance. Complement protein C1, C2, C3, C4 के deficiency से related SLE होता है। ठीक है, इसमें SLE में क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन इंक्रीज हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ C1, C2, C3 एंड C4 SLE होने का चांस होता है। बिकॉज ऑफ C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड कौन सा डिजीज़ है? देयर इज इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस फ्रॉम एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स लाइक निजेरिया एंड ऑल्सो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ठीक है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से प्रोटीन्स आते हैं? C5 to C9 ये सारे प्रोटीन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर C5 to C8 का डिफिशियंसी है तो निजेरिया और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के इन्फेक्शंस का ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज ऑफ C1 एस्टरेज इनहिबिटर वी हैव हेरिडिटरी एंजियोएडेमा। ठीक है, हेरिडिटरी एंजियोएडेमा का ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है। लास्ट इज अदर कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन से एसोसिएटेड कौन सी डिजीज़ है? डिसरेगुलेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लीड्स टू वेरियस डिजीजेज। अर्ली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दैट इज C1 to C4 के कारण SLE होता है। C3 के कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। MAC दैट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के कारण निजेरिया और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जैसे इन्फेक्शंस का ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होता है। C1s एस्टरेज इनहिबिटर के कारण हेरिडिटरी एंजियोएडेमा का चांस होता है। दैट वाज अबाउट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम।